Start recording. Hello everyone, I'm Bhumika Indori, Product Coordinator, LegalEdge After College. In today's video, we will be discussing 10 landmark judgments from the year 2021, which are very important for your upcoming CLAT PG 2023 examination. आपका एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं, सो पैनिक मत हो, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. फर्स्ट यहाँ पे जो जजमेंट आपको दिख रहा है दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नाजी डिसाइडेड बाय जस्टिस एन बी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो सेक्शन 43D5 ऑफ अनलॉफुल असेंबली एंड प्रिवेंशन एक्ट है वो पर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास एबिलिटी है उसको आउट्स नहीं करता है. ठीक है, कौन सी एबिलिटी टू ग्रांट बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल. ऑलराइट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि regards of the provision will melt down where there is no likelihood of trial being completed within a reasonable time and the period of incarceration already undergone has exceeded a substantial part of the prescribed sentence. All right, in this judgment, Supreme Court referred the judgment of Shaheen Welfare Association versus Union of India 1996. All right, in which it was held that gross delay in disposal of such cases would justify the invocation of Article number 21 of the Constitution of India, which talks about right to life and personal liberty and the consequential necessity to release them under trial on bail. All right, now next judgment is Vikas Kumar versus UPSC. Now, this was a landmark judgment of that time, decided by Justice D.Y. Chandrachud, Justice Indra Banerjee, and Justice Sanjeev Khanna. Now, understand the issue in this particular case was whether right and entitlements of physically disabled people can be restricted on the definition of benchmark disability as a condition of eligibility, and the sections refer were 2S, 2R, 2Z, of uh, RPWD Act 2016, which deals with disability. And in this particular case, Supreme Court observed that जो decision वी सुरेंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में आया था, ठीक है, वो कोई अब बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है. आफ्टर राइट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी एक्ट 2016 केम इनटू द फोर्स, एंड यहाँ पे आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी डिस्कस किया गया एंड कहा गया द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इज एप्लीकेबल इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, which is titled Special Provision for Persons with Benchmark Disability, and that these rights and entitlements which are conferred upon physically disabled people cannot be constructed by adopting the definition of benchmark disability as a conditional precedent. All right. Now, next case of the day is Engineering Analysis Center for Excellence Private Limited versus the Commissioner of Income Tax, decided by Justice R.F. Nariman and Justice Hemant Gupta and Justice B.R. Gavai. In this particular case, Supreme Court held that the amount paid by Indian companies for the use of softwares developed by foreign companies do not amount to royalty. तो जो भी अमाउंट इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनीज को सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए देती है उसे रॉयल्टी में नहीं काउंट किया जाएगा, एंड सच पेमेंट, ऐसी जो पेमेंट हो रही है वो गिव राइज नहीं, वो डू नॉट गिव राइज टू इनकम विच इज टैक्सेबल इन इंडिया. ठीक है, तो therefore there is no liability for Indian companies to deduct tax at source with respect to purchase of software from foreign companies. तो अगर आप जो इंडियन कंपनीज है फॉरेन कंट्री से अगर सॉफ्टवेयर परचेज करती हैं तो उन्हें रिस्पेक्टिव परचेज पे टीडीएस नहीं काटना होगा. नो लायबिलिटी फॉर इंडियन कंपनी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. ऑल राइट, नेक्स्ट यहाँ पे केस है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड वर्सेस मैसर्स नवी गांध
टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड डिसाइडेड बाय जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड जस्टिस अजय रस्तोगी। नाउ यहाँ पे द केस इज रिलेटेड विद आर्बिट्रेशन एक्ट। यहाँ पे ये कहा गया कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग पिटीशन प्रोवाइडेड है सेक्शन नंबर 34 ऑफ Arbitration and Conciliation Act 1996, which talks about setting aside the arbitral award, वहां पे जो डेट होगी, ठीक है, जो डेट मानी जाएगी अवार्ड की वो होगी जिस दिन जो अवार्ड की कॉपी है वो साइन की गई है, ठीक है। द द साइंड कॉपी ऑफ अवार्ड वाज मेड अवेलेबल एंड अवेलेबल की गई है पार्टीज को, ठीक है। देयर इज ओनली वन डेट रिकग्नाइज्ड बाय लॉ। यहाँ पे ये भी कहा गया कि लॉ सिर्फ एक ही डेट को रिकग्नाइज करता है, वो डेट वो वाली होती है जबकि वो कॉपी जो अवार्ड की है वो साइन की जाती है, रिसीव की जाती है पार्टी से, from which the period of limitation of filing objection would start ticking. There cannot be finality in award except after it is signed, because signing of award gives legal effect and finality of the award, ठीक है। तो जब तक अवार्ड साइन नहीं होता है तब तक उसे फाइनल नहीं माना जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट केस लॉ हियर इज फकरे आलम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डिसाइडेड बाय जस्टिस संजय कृष्ण कौल एंड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी। नाउ ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया दैट द time period for investigation specified in section 167 of CRPC cannot be extended by seeking file supplementary charge sheet qua UAPA offense। all right, तो ऐसा नहीं है कि 167 CRPC में जो टाइम लिमिट दे रखी है वो एक्सीड हो जाएगी क्योंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट हो चुकी है, ठीक है। नाउ इस केस को डिसाइड करते वक्त जो बेंच है उसने ग्रांट की डिफॉल्ट बेल टू फकरे आलम, ठीक है, हु वाज accused under section 18 of unlawful assembly and prevention act, and supreme court reiterated that default bail under the first proviso of sections 167 to CRPC is a fundamental right and at the same time इट इज नॉट ओनली मियर स्टैचुरी राइट। तो यहाँ पे क्योंकि एक स्टैच्यूट में प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करते हुए कहा कि ये एक फंडामेंटल राइट है स्टैचुरी राइट होने के साथ साथ। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट केस लॉ इज अपर्णा भट्ट स्टेट ऑफ MP, decided by Justice A.M. Khanwilkar and Justice S. Ravindra Bhatt. In this particular case, Supreme Court suggested that gender sensitization training should be imparted to judges and public prosecutor। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि जो जजेस हैं और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं इनको जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग देनी चाहिए और यहाँ पे ये भी कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए कि वो अपने कोर्स ऑफ LLB एंड AIBE में ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट करें। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक विक्टिम को ये ऑर्डर दिया गया था कि वो राखी बांधे अक्यूज्ड को, ठीक है। दीज डायरेक्शंस वर इशूड इन द जजमेंट सेटिंग असाइड द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जजमेंट that had imposed a bail condition upon a person accused of outraging the modesty of his neighbor to request the victim to tie the rakhi around his wrist। तो क्योंकि इस जजमेंट को देते हुए बेल ग्रांट करते वक्त हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई तुम राखी बांध दो और वो एक कंडीशन मानी गई थी बेल की, तो ऐसी चीजें ना हो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया इन द केस ऑफ अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज मोहम्मद Salimullah versus Union of India, decided by the then Chief Justice S.A. Bobde, Justice A.S. Bopanna, and Justice V. Rama Subramaniam। Now, यहाँ इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो जजमेंट को रिलाई किया गया दैट वाज गम्बिया वर्सेस म्यांमार। ऑलराइट, सो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड इस जजमेंट को आप रोहिंग्या केस के नाम से भी जानते हैं। इस जजमेंट में while rejecting a plea to stop deportation of Rohingya refugee detained in Jammu, Supreme Court observed that right not to be deported is ancillary to fundamental right। ठीक है, जो आपका fundamental right provided है 19(1)E में जो बात करता है to reside or settle in any part of India, ठीक है, उसके ancillary है right not to deport। लेकिन
जो फंडामेंटल राइट 19(1)(e है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है. Whether the notice issued by the Union of India for deportation of Rohingya refugee valid, or does it infringe any right or any purpose? This was the issue in this particular case. जो बेंच थी उसने ये हेल्ड किया कि जो रोहिंग्यास जम्मू में है, ठीक है, उनको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाए. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट एथ केस ऑफ द डे इज Assets Reconstruction Company India Limited versus Vishal Jaiswal. Now, decided by Justice R.F. Nariman and Justice B.R. Gavai, Justice Rishikesh Roy. Now, in this particular judgment, Supreme Court held that entry made in book of accounts, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होती है बैलेंस शीट में, ठीक है, उनको सेक्शन 18 लिमिटेशन के तहत और under section 18 of limitation act that will amount to acknowledgement of liability. All right, now section number 238A of IPC enables the provision of limitation act to be applicable to the proceeding taking place before National Company Law Appellate Tribunal and National Company Law Tribunal. कोर्ट ने ये भी कहा कि देयर इज नथिंग मेंशन इन दिस सेक्शन व्हिच प्रिवेंट सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट टू बी अप्लाइड ऑन आईबीसी. ठीक है, एंड इस जजमेंट को या ये जजमेंट देते हुए कंक्लूजन कोर्ट ने ये रिलाई किया जजमेंट ऑफ लक्ष्मी पत सुराना वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेसनाथ सिंह एंड अनदर्स वर्सेस बेदवती Siorapalli Corporation Bank Limited. All right. Now, next case is State of Kerala and others versus Lesema Joseph, decided by Justice Sanjay Krishna Kaul and Justice R. Subhas Reddy. Now, in this particular judgment, the bench followed a judgment delivered by three-judge bench on January 2020. The name of the judgment was Siddharaju versus State of Kerala. इस particular case को इस Lesema जोसेफ के केस को डिसाइड करते वक्त रेफर किया गया, ठीक है, रिलाई किया गया, इन विच it was held that the rule of no reservation and promotion as laid down in Indira Sawhney case has no application on person with disability. Supreme Court also held that in 1995 Act recognized the right to reservation and promotion. It identification of post for reservation as per Section 32 of 1995 Act is a prerequisite for an appointment, but an appointment cannot be frustrated by refusing to identify post. All right, and बाकी जो observation किए गए वो यहाँ लिखे हैं इन इस पर्टिकुलर केस को डिसाइड करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी किसको, केरला गवर्नमेंट को, टू इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर डिसेबल्ड विद इन 3 months. All right, now last case of the day is Union of India versus Rajendra Shah and others, decided by Justice Rohington Nariman and Justice K.M. Joseph B.R. Gabai. Three-judge bench dismissed the appeal filed by Union of India against the judgment of Gujarat High Court. The bench unanimously held that 97th constitutional amendment जो कि cooperative society से डील करता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, उसे स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए क्योंकि उसको पास करते वक्त जो आर्टिकल 368 क्लॉज 2 की रिक्वायरमेंट होती है विच इज ratification by not less than 1/2 of the state legislature, वो फुलफिल नहीं की गई थी. All right, तो you all know आर्टिकल नंबर 368 टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट और वहां पे लिखा हुआ है कि जो सेकेंड पार्ट में प्रोवाइडेड है वो सारी चीज में अगर आपको अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए आपको रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1/2 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे वो रेटिफिकेशन नहीं हुआ था, इसीलिए जो 97th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसे स्ट्रक डाउन कर दिया इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया versus Rajendra Shah and others by Justice Rohington Nariman, K.M. Joseph and B.R. Gavai unanimously. All right, so that's it for today. Let's meet you in the next session. Till then, keep studying. Bye bye. Bhumika Indori signing off.